In this video we will study about the blood in detail. So the human body is made up mostly water, around 60 to 65 percentage. Now in the human body the blood is not like a body fluid, यानी कि जो ब्लड है वो बॉडी फ्लूइड नहीं है. एज लाइक अ टीयर्स, यानी कि वो आंसुओं की तरह या किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन और सलाइवा और यूरिन की तरह वो बॉडी फ्लूइड नहीं है. बट द ब्लड इज लाइक अ लिविंग टिश्यू, वो एक लिविंग टिश्यू है विच कंसिस्ट द सेल्स विद इन अ लिक्विड. नाउ नेक्स्ट, इन द ह्यूमन बॉडी देर इज अ टू टाइप्स ऑफ द ब्लड. The first one is the arterial blood and the second one is the venous blood. So the arterial blood, it is having the bright red in color and also contains the oxyhemoglobin, and the second one is the venous blood. Now the next one is there is the composition of the blood. So the human blood, it is made up of two components. The first one is the plasma and the second one is the elements. Into the elements there is a RBC and red blood cells. Second one is the WBC, white blood cells, and third one is the platelets. Also it is also known as the thrombocytes. First of all we will study about the plasma. It is the liquid part of the blood. It consists the liquid solvent, mostly water 93% and solutes 7%. Most of the solutes are proteins. It is also consists the salt, nutrients, iron, gas, hormones and enzymes. Now next we will study about the plasma proteins. It is the 8% of the blood. So there are the three types of the plasma protein: albumin, globulin and fibrinogen. So first of all it is the albumin. It is help into transport the many solutes. Now the second one is the globulin. It is also transport the solutes and help into the clotting, and it is also part of the immune system, and some globulin also act as a antibodies. Now the third one is the fibrinogen. इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ द क्लोटिंग, यानी कि कभी भी ब्लीडिंग होगा तो ये एक क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम कर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड. सो फर्स्ट वन इट इज़ द RBC. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द erythrocyte. So the main job of RBC, it is to carry the oxygen to the cells. Now the shape of the RBC, it is a biconcave disc, and the center of the RBC, it is thin and the edges are thick. The 7.5 micrometer diameter and 2.0 micrometer are the thickness of the RBC. The RBCs are flexible and easily fit through the narrow capillaries. यानी कि जो RBC है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो एकदम छोटी सी कैपिलरी में भी वो फिट आ जाते हैं. Now next, the RBCs are packed with full of the hemoglobin molecules. So जो हीमोग्लोबिन है RBC में वो ऑक्सीजन कैरी करके सेल और टिश्यू तक पहुंचाएगा पूरी बॉडी में. अब हमें ये सवाल होगा कि RBC बनते कहाँ पे है बॉडी में. तो RBC है वो हमारे बॉडी में रेड बोन मेरो है, वहाँ पे बनते हैं बोन्स में, रेड बोन मेरो में. तो जो फॉर्मेशन ऑफ द RBC है वो प्रोसेस को बोलेंगे हम इरिथ्रोपोएसिस. एंड द लाइफ स्पैन ऑफ द RBC, इट इज़ 100 to 120 days. नाउ द ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC, इट इज़ स्प्लीन, यानी कि जो RBC है वो डेड हो जाएंगे, उसकी उस सेल की डेथ हो जाएगी, तो वो कहाँ पे स्टोर होंगे? स्प्लीन में. Now the next one is the disorder into the RBC. So the first one is the anemia. Into this there is a decreased hemoglobin level into the body. So due to this the cells and the tissue of the body can't get the proper amount of the oxygen. Now the second one is the abnormal hemoglobin, यानी कि हीमोग्लोबिन है वो abnormal condition में होगा, normal उसका structures नहीं होगा. And the third one is the polycythemia. Into this condition the RBC is increased. Now the second elements of the blood, it is the WBC, यानी कि white blood cell, or it is also known as the leukocytes. So the WBC is larger than the RBC.
And the formation of the WBC it is occur into the stem cells of the bone marrow. यानी कि जो फॉर्मेशन है वो WBC का वो कहाँ पे होगा, स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो. यानी कि WBC और RBC both are formed into the bone marrow. Now the shape of the WBC. So the WBC it is the large and irregular cell and it is having the lobuled nucleus. Now the function of the WBC. So first function it is the protection of the body as a part of the immune system. यानी कि WBC है वो immune system का part है. यानी कि कोई भी foreign body अगर हमारी ह्यूमन बॉडी पे अटैक करेगा तो WBC उसके साथ फाइट करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देगा. Now the second function is the attack and destroy bacteria and pathogens. So the foreign bacteria and pathogens are entered into the body, so WBC are destroy them. Now the third function is the remove the dead cells and the tissue. यानी कि कोई भी बॉडी में हमारी बॉडी में डेड सेल्स होगा, कोई टिश्यू हो गई, अगर कोई बैक्टीरिया आएंगे और उसको भी डिस्ट्रॉय किया होगा तो उसको रिमूव करने का काम WBC करेगा. Now the third element it is the platelet or a thrombocyte. It is the not wall cell. They are the small irregular in shape and having the 2 to 4 micrometer in diameter. Now the function of the thrombocyte or a platelets. The first one is it secrete the vasoconstrictors. Second one is it promote the hemostasis. यानी कि कभी भी ब्लीडिंग होगा कोई इंजरी के बाद तो ये हीमोस्टेटिस यानी कि ब्लड को रोक देगा. ये प्रोसेस में हेल्प करेगा प्लेटलेट्स. द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लेटलेट इट इज़ 1 to 2 weeks. नाउ द डिसऑर्डर इनटू द प्लेटलेट. द फर्स्ट वन इज द स्पॉन्टेनियस क्लोटिंग. द सेकंड वन इज द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट इज डिक्रीज्ड इनटू द काउंट. सो किसी भी टर्म में अगर पेनिया आएगा तो मतलब कि वो डिक्रीज हो रहा है और साइटोसिस आएगा मतलब कि वो इंक्रीज हो रहा है. And the third one is